अभी हम लोग क्या करेंगे, डेल इंस्पिरन ये जो मॉडल है इसके SSD अपग्रेड करने के लिए हम लोग चारों तरफ से 3 और ये 2 5 4 9 स्क्रू है, इसको हम लोग पहले अनप्लग कर देंगे, निकाल देंगे। स्वाप करेंगे धीरे धीरे करके, ये पैनल को हमारा जो कनेक्टर है इसको धीरे धीरे करके अनप्लग करेंगे, तो ये ओपन हो जाएगा पीछे से। इसको अनप्लग कर देंगे पीछे से। देखिए यहाँ ये मेरा इसका पॉइंट है और ये मेरा SSD का पॉइंट है। इसमें मैं SSD डालूंगा, ये कार्ड वाला लगेगा। एक चीज़ सबको याद रखना है, जैसे कि हम लोग SSD या जो कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स इसको चेंज करेंगे, पहले तो हम लोग का बैटरी का कनेक्टर से बैटरी को अनप्लग करेंगे, नहीं तो डायल लगाने से मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। ये 256 का SSD